Machephy Eduworld. Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about motion in accelerated frame. All right, let's start with the doubts. Naman, which question were you talking about? 14, question number 14. Chapter? Chapter 2. Chapter 2, okay. So chapter 2, question number 14 is that A dot A cross B is 0. A dot A cross B is 0. So, अच्छा नमन, tell me अगर एक वेक्टर A इस प्लेन में है और B वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो A क्रॉस B, अगर मैंने थर्ड वेक्टर डिफाइन किया A क्रॉस B, तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड रूल लगाएंगे। अगर ए और बी दोनों ही प्लेन में है तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। इज दिस क्लियर? सपोज ये दोनों ही प्लेन में है, तो जो सी वेक्टर हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सी वेक्टर जो है ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी को सी ले लिया तो ए डॉट सी 0 हो जाएगा, because that is AC cos 90. Cos 90 होता है 0. A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट will be 0 because cos 90 is 0. तो क्या और कोई डाउट? सर कैसे किया समझ नहीं आया। C वेक्टर A B के परपेंडिकुलर है। हाँ तो C वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर हो गया। हाँ ठीक है, तो मैंने A क्रॉस B को C वेक्टर ले लिया, ओके। तो A डॉट C आ गया। हाँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? AC cos 90 mod of A mod of C cos थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है। हाँ तो ये 0 आ जाएगा। Okay, let us start with the acceleration problems. So one स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे। वेट मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस हैं टू मेजर वेट। फर्स्ट थिंग इज दैट एक वेइंग मशीन होती है। तो वेइंग मशीन का एफवीडी बनाते हैं। वेइंग मशीन सपोज ग्राउंड पे रखा हुआ है एंड यू हैव अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट। पर्सन छोटा लग रहा है बट लेट अस सपोज इट्स अ नॉर्मल पर्सन एंड दिस इज द वेट मशीन। तो draw the free body diagram of the person and the weight machine. Let us say इसका जो mass है that is small m and weighing machine का mass is capital M. Draw the free body diagram. So FBD draw करते हैं तो person का तो FBD बड़ा आसान है। mg will be acting downward and weighing machine will be applying normal force on him that will be acting upward. और weighing machine का FBD बनाएंगे। So normal force, the person that applying normal force will be downward in the downward direction और इसका खुद का mg भी नीचे लगेगा and normal force applied by the ground on weighing machine, call it n dash, that will be acting upward. अब weighing machine जो measure करता है that is n. weighing machine n measure करता है. So how does it measure that? यहाँ पे या तो सेंसर्स लगे होंगे या तो अंदर स्प्रिंग होता है। टू थिंग्स। So, अभी नए वाले जो आते हैं यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, तो जितना नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर से उतना ये मेजर कर लेंगे। So, n is equal to n dash plus mg. तो वेइंग मशीन जो मेजर करेगा दैट इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वेइंग मशीन measures normal force applied on it. स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता था? टेंशन वाला फोर्स। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है उसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है। स्प्रिंग बैलेंस वर्क लाइक दैट एंड वेइंग मशीन मेजर करता है नॉर्मल फोर्स बट
that will show a mass, corresponding mass. जो mass को show करेगा, that will be value of n divided by g. Value of n divided by g. तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकती है. सपोज वेइंग मशीन लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. इन दैट केस द नॉर्मल फोर्स विल चेंज. सो लेट अस सी कि वेइंग मशीन अगर लिफ्ट में रखते हैं तो क्या होता है. सर क्या सर वो इक्वेशन में डाउट है. इक्वेशन में n equals n dash plus mg. that will be n dash is equal to n plus mg. Just a second. It is not accelerating, so forces will be balanced. So we have a lift और लिफ्ट के अंदर ये सेम सेटअप रखा. वेइंग मशीन है नीचे and there is a person standing. So if lift is not moving, then the person will just measure the mass. If acceleration is equal to 0, so normal force कितना हो जाएगा, mg के equal. This is normal force applied by man on. Normal force applied by man on weighing machine. So जो weighing machine है क्या शो करेगा, apparent mass कितना होगा, that will be n by g. That will be equal to mg by g, that is जितना mass है उतना ही शो करेगा. No worries, that is the simple case. But suppose your lift is accelerating. If your lift is accelerating, let us say अभी lift ऊपर accelerate कर रहा है with acceleration a. In that case, you have the same mass and same weighing machine. अभी पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं. mg will be acting on him in the downward direction. Plus there is an acceleration because person भी लिफ्ट के साथ ही एक्सेलरेट होगा ऊपर की डायरेक्शन. तो सी एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स की वजह से आ रहा है. बिकॉज लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट मैन पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाए. एंड दैट विल कॉज, बढ़ जाएगी मतलब mg से ज्यादा होगी. एंड दैट विल कॉज एन एक्सेलरेशन. So we can write from Newton's second law that n minus mg equals to ma. यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू m into g plus a. So measured mass जो measured होगा वो बढ़ गया लिफ्ट के ऊपर जाने की वजह से. That is n by g. I can write it as m 1 plus a by g. m into 1 plus a by g. So ऊपर का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतना वेइंग मशीन ज्यादा मास शो करेगी. This is the weight. This is the weight, measured weight, and this is the measured mass. This is the measured weight. Note this. और जिनका हो गया, then you can similarly calculate what will be the measured mass and measured weight when lift is accelerating in the downward direction. In the same way, we can calculate the. Yeah. सर वो कॉपी करना था एंड का पार्ट. Yeah. डन सर. Now
The lift is going downward. Cursor is here. And so is the weighing machine. Person has mass m. So कैपेसिटी बनाएंगे तो नॉर्मल फोर्स तो ऑफ कोर्स ऊपर लग रहा होगा एंड mg will be acting on the downward direction. So नीचे acceleration ज्यादा है, नीचे के direction में acceleration है. So I can write the from Newton's second law mg minus n is equal to f. From here I can get the value of n is equal to mg minus. This is the measured weight. Measured weight. So weighing machine weight measure करता है, but जो reading show करता है वो mass show करता है. So measured mass, that would be n by g, and that would be equal to m1 minus a by g. 1 minus a by g. But यहाँ पे एक difficulty है, see, measured mass negative हो जाएगा if a becomes greater than g. If a becomes greater than g. So a becomes greater than g का मतलब है कि नीचे g से ज्यादा acceleration से fall करने लगे. So उस केस में this will be freely falling. a जैसे ही g के equal हो जाएगा, the man will start freely falling. So imagine it कि एक बड़े से कंटेनर में किसी को free fall करा दिया. So that will be free fall. Means so in that case, इस वाले केस में a हमेशा g से कम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है. ठीक है, वैलिड है. a is less than g. a greater than g हो गया तो of course man will be, इसका सर टकरा जाएगा यहाँ पे. And if a is equal to g, both of them will be freely falling. Suppose there is a lift and lift is going in the upward direction with acceleration 2 meter per second square. Person का mass earth के surface पे, person का mass is 70 kg and find the measured mass. Find his measured mass. इसको हम apparent mass भी बोलते हैं. What will be his apparent mass? Find his measured mass or apparent mass in the following cases. Take value of g as 10. Machephy, tell me the answer for the first one. कितना mass होगा apparent mass? Right, I'm waiting for short. 24. How much? 84. 24. 94. It will be 70 into 1 plus ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा normal force लेगा 1 plus a by g. So 12 7 to 84. That will be 84 kg. Nirmit, what will be the apparent mass for this one? 126 kg. 126. See, यहाँ पे acceleration given नहीं है, speed given है. तो speed given है, it's a constant value, so acceleration कितना होगा? 8. How 8? Sir, distance traveled in 1 second is 4 meter. नहीं. Velocity given है, speed given है, constant value है, तो it is not changing. So acceleration is 0.
ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, इनिशियल The कंडीशन velocity constant है. yeah of course velocity is written as 4 meter per second. ऐसा नहीं कि इस टाइम पे 4 सेकंड, it's not given कि it's time for 4 second. Velocity is always 4 second. Here acceleration was always 2 meter per second. So what will be the answer? Acceleration 0 है तो 70 kg. 70 kg, कोई भी चेंज नहीं आएगा. Arjun, what will be the apparent mass in this case? 35. 35. That is correct. So 70 into 1 minus 5 by 10. नीचे जा रहे हैं. That will be just 35 kg. All right. After this, so there is an issue in these cases. I'll take this case first. So there's an issue in this case जहाँ पे Newton's law valid नहीं होता है. And how to some do this type of question? As I said, weighing machine के ऊपर रखा हुआ है. And या weighing machine हटा भी दें. Just there is a man standing in an elevator. Just a man standing in an elevator. So बाहर से कोई person observe कर रहा है. Suppose person A is observing. तो अभी तक हम A के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे. तो फ्री बॉडी डायग्राम A का FBD. A का FBD, A अगर फिजिक्स पढ़ता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है तो वो कैसा बनाएगा जैसा हम पहले बना रहे थे. mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स will be upward और ऊपर एक्सेलरेशन है n minus mg, ऊपर एक्सेलरेशन, so n minus mg is equal to ma. so यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ जाएगा मास टाइम्स g plus a. so a का fbd ऐसा दिखेगा and this is the correct fbd, no doubt about it. This is the correct fbd. नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हो सही है. तो उसके बाद फिर अगर वेइंग मशीन रखा तो apparent mass निकाल सकते हैं. But suppose you have a friend B जो लिफ्ट के अंदर है. Here lift is accelerating. Lift is accelerating. अंदर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. So B will observe कि this man is at rest. So B का FBD, B will draw FBD. So B will observe इस जिस मैन का FBD बना रहे थे, let him call him B. B observes that B is at rest. ये मूव नहीं कर रहा B के रेस्पेक्ट में. तो B जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, so इसको पता है कि सिर्फ दो ही फोर्स लगने वाले हैं, ऊपर की डायरेक्शन में N और नीचे के डायरेक्शन में mg. So B लिख देगा कि n is equal to mg और n minus mg is 0. But this will be wrong. This is not the correct equation. So here this is the limitation of Newton's law. Here there's a limitation of Newton's law. So A बाहर से observe कर रहा है सारी चीजों को. So he is said to be non-inertial frame. Non-inertial frame. So non-inertial frame का मतलब कि A का acceleration of A is 0. Acceleration of A is 0. वो ग्राउंड पे बैठ के आराम से ऑब्जर्व कर रहा है.
but B accelerated as B is accelerated, तो B के फ्रेम में मतलब B के रेस्पेक्ट में his frame is, he is an inertial frame. He is an inertial frame. Inertial frame just एक word है सर, बहुत खास definition नहीं है इसका, बस इसका मतलब है कि he is accelerated. अगर B खुद accelerate कर रहा है तो जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा न्यूटन्स लॉ से वो गलत आएगा, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा वो गलत आएगा. सो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे गलत हो जाता है. एंड टू मेक इट राइट, टू करेक्ट इट, व्हाट वी लाइक टू डू, करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम हो, उसके लिए हम एक और फोर्स ऐड कर देते हैं. जिस डायरेक्शन में बी एक्सेलरेटेड होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वी राइट अ फोर्स जिसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द पर्सन multiplied by acceleration of the inertial frame. Mass of the person multiplied by acceleration of the person. एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड किया है टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड. न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेटेड फ्रेम में या इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं था. उसको वैलिड करने के लिए आई हैव एडेड दिस फोर्स. This is not a real force. Fp is called a pseudo force. Real force नहीं है, इसको बस लगाया गया है न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए. To make Newton's law valid in inertial frame. Make Newton's law valid in inertial frame. Inertial frame का मतलब accelerated frame. जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में that would be called, उसके रिस्पेक्ट में pretty different हो. अच्छा, B is accelerated now, so B will be called, B is a non-inertial frame. This is inertial frame. Sorry, hold on. जिसके रेस्पेक्ट में acceleration 0 है, that is inertial frame. And if your acceleration is with respect to person who is accelerating, that will be non-inertial. So to make Newton's law valid for non-inertial frame में person is accelerating. So inertial frame में law of inertia valid होता है. Remember it like this: inertial frame, law of inertia is valid. And non-inertial frame, law of inertia is not valid. This Newton's law is invalid. Law of inertia is not valid. उसको वैलिड कराने के लिए हमने कौन सा फोर्स लगाया? एक स्यूडो फोर्स लगाया टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, जो ये स्यूडो फोर्स लगाया, दैट इज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन,
उसकी वजह से फिर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg प्लस दी स्यूडो फोर्स। यहाँ से फिर करेक्ट रिलेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma, दैट वाज आवर अर्लियर केस। So remember, pseudo force equals to mass of object जिसका FBD बना रहे हैं multiplied by mass of object whose FBD is drawn। यहाँ पे पर्सन P का FBD बना रहे थे तो mass of person लिया multiplied by acceleration of non-inertial frame, तो ये उसका एक्सेलरेशन है जो बंदा एफबीडी बना रहा है। दिस इज that is with respect to acceleration of the person who is drawing FBD, acceleration of the person who is drawing FBD। इस केस में दोनों का acceleration same है luckily, but there are cases in which that is not that does not hold। This is acceleration of the person who is drawing FBD। Let's take an example. So suppose you are in a lift and there is a person of mass 50 kg and ये lift ऊपर accelerate कर रहा है with speed 4 meter per second square and you are going along with the lift। जो person FBD बना रहा है और FBD with respect to lift बोला जाएगा जिसको। Suppose person B is drawing the FBD, so you'll draw FBD with respect to B, or FBD with respect to B will be FBD with respect to the lift। जब FBD draw करेंगे, so person का mass 50 है तो it will be 50 G नीचे के डायरेक्शन में, ऊपर of course normal force लगेगा, प्लस क्योंकि person B या लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन FB, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी mass of the person, mass of the object जिसका FBD बना रहे हैं, that is 50 multiplied by acceleration जिसके respect में FBD बना रहे हैं, that is 4। So this will come out to be 200 Newton, and then we can write normal force is equal to pseudo force plus mg, that is 50 G। From here you will get normal force as 500 200 plus 500, that is 700 Newton। So ध्यान रखना है pseudo force was not a real force, उसको बस लाया गया है न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए। So in a non-inertial frame means law of inertia is not valid। In that frame, Newton's law is not valid। To make that valid, we bring in a pseudo force and thus write the heading as pseudo force। Okay. So in the following questions, you have to find the pseudo force only, and then we'll do some questions in which the application of pseudo force makes things easier। Find the magnitude and direction of pseudo force in the following cases. Magnitude and the direction of pseudo force when free body diagram is drawn with respect to Swarn of A with respect to B। First question, do the lift questions first। So suppose this is person A
and he has mass m, and person B is inside the lift, and the whole lift is going downward with acceleration a, which is less than g. To finally draw the free body diagram also, and then you have to show the direction of the pseudo force. Here there are two lifts. This person A is going with acceleration a1, and person B is going upwards with acceleration a. His mass is m. It's also given that a1 is greater than a2. a1 is greater than a2. A is going upward with acceleration a1, and B is going downwards with acceleration a2. Okay, in all these four cases, draw the FBD with respect to B and also show the pseudo force one by one. Naman, can you tell me the first one? The word diagram bana diya first one. Naman is not here. Nirvan, can you tell me the first one? Sir, MA. MA. Yeah. Okay. Simply FBD draw kar rahe agar Upper direction. upward direction. That will be correct. So normal force will be upward. Mg will be downward, or pseudo force, that is Fs, will be mass of object into acceleration of the person जो FBD बना रहा है. So that will give us n plus Fs is equal to mg. यहाँ से normal force निकाल सकते हैं m into g minus. Bharvi, tell me the value of. Let us draw the FBD of this person. क्या forces लगेंगे, and then tell me the pseudo force कितना होगा. mg downwards, mg downwards, n upwards, n upwards, pseudo force upwards, pseudo force upwards. But this person is also accelerating upwards, no? but इसका कम है ना acceleration. No, this doesn't work like that. Pseudo force only depends on the person who is accelerating. जो FBD draw कर रहे हैं वो सिर्फ उस पर depend करेगा. So pseudo force will be downwards, and its value will be MA2. Yeah. So normal force will be mg plus ma2. Is this correct, or we need some other modification? Bharvi, is this correct? हाँ sir. See, there is one more thing. यहाँ पे दोनों का acceleration same था. So that's why there was no net acceleration. So net force 0 था. But in here, this person B को ऐसा appear होगा कि person A is accelerating upwards with acceleration a1 minus a2. So
this is not wrong. This we cannot write it like this. We have to write that normal force minus mg minus pseudo force, that will be equal to pseudo force minus the pseudo force, that will be equal to mass into acceleration. Mass of the person into acceleration is a1 minus e2. यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, so n की वैल्यू आएगी, fp की वैल्यू सही निकाले, that is a mass into a2, and that will get cancel out, and normal force will be m1 a1 plus g, and इतना आना भी चाहिए. Why? Because normal force की वैल्यू अगर सिंपली कैलकुलेट करें बाहर बैठ के, so m into a1 plus g आना चाहिए. Bharvi, is this clear? हाँ सर. Okay. Any other students? कोई doubt है, then you ask. Sir, I didn't understand this. See, person B is observing person A, तो A ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो pseudo force तो सही निकाला है, but there is a relative acceleration also. Relative acceleration. अब B जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है तो नेट फोर्स तो दिखाएगा ही, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी दिखाएगा. प्रीवियस केसेस में B और A साथ साथ जा रहे थे तो एक्सेलरेशन 0 था, तो नेट फोर्स 0 था. बट इस केस में A B के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ऊपर with acceleration a1 minus e2. So net force, that is n minus mg minus pseudo force, is equal to mass into relative acceleration. इसको सॉल्व करने से Okay, फिर से sir. हमारा ओरिजिनल रिजल्ट ही आ जाता है, एंड दिस इज द प्रूफ दैट आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. नॉर्मल फोर्स इतना ही आना चाहिए. अगर person is moving upwards with acceleration a1, then normal force should be m into a1 plus g. ठीक है. After this, similarly you have to draw free body diagram, बनाना है अच्छे से, इक्वेशन लिखना है, फिर नॉर्मल फोर्स यू नो m into g minus a आना चाहिए फाइनल. इसको g plus a1 लिख देते हैं in our standard form. Okay, try question number 3 and 4 now. Arjun, tell me the free body diagram of this person A with respect to B. What are the forces on this person? The n upwards, And upwards, of course. mg downwards. Mg downwards. And pseudo force, वो किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? Upwards. Upwards, because जो person FBD draw कर रहा है वो नीचे accelerate कर रहा है. So pseudo force will be upwards. What will be the value of pseudo force? It will be m, जिसका FBD बना रहा है उसका मास, multiplied by जो FBD बना रहा है उसका acceleration. So m into 8. Is it clear, Arjun? Yes, sir. Okay. और इस पर्सन का एक्सेलरेशन क्या होगा बी के रेस्पेक्ट में? Acceleration. रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं. ये a1 से एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, ये a2 से एक्सेलरेट कर रहा है. You can use your formula. Acceleration of 1 with respect to 2 is equal to acceleration of 1 minus acceleration of 2. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो a1 minus a2. Okay, solve this and then find out the value of the normal force.
सॉल्व दिस एंड टेल मी कितना आएगा नॉर्मल फोर्स। Arjun, tell me the value of normal force कितना आया? Arjun, can you hear me? Yes, sir. कितना आ रहा है नॉर्मल फोर्स? See, I'm solving. I don't know where you're facing issues. Simply FP यहाँ put करके solve ही करना है. mg minus cancel out हो जाएगा. Normal force is mg minus a1. वही जो पहले केस में आ रहा था, सबसे पहले निकाला था. m into g minus a1. अगर कोई body downward accelerate कर रही है तो the normal force will be g minus a1. Mass into Yes, g sir. minus a1. Yeah. Sir, FP upwards है तो प्लस होगा ना? नहीं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए mg माइनस एस माइनस एन माइनस एन पी. Kushag, you have to tell me the figure diagram of this person. Kushag, can you hear me? Okay, Naman, can you solve the question number 4? Can you draw the FBD? Sir, mg will be downwards हाँ यार, तो डाउनवर्ड होगा ही. फिर और उसका न्यूटन लगेगा. अपवर्ड्स, न्यूटन नहीं, एन बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. ओ सॉरी सर, नॉर्मल गलती हाँ. से न्यूटन बोल दिया सर. उसके बाद एफपी किधर लगेगा? सर डाउनवर्ड्स लगेगा. नहीं, एफपी लगता है उस डायरेक्शन में जिधर सी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वो पर्सन जो फ्रीवर्ड डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है, तो सी मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, pseudo फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्री. ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन जो एफबीडी बना रहा है. तो सी इस केस में पर्सन भी नीचे जा रहा है, तो मैंने एफपी ऊपर लगाया. जो पर्सन फ्रीवर्ड डायग्राम ड्रॉ कर रहा था वो ऊपर जा रहा है, तो एफपी मैंने नीचे लगाया. इस केस में ये पर्सन नीचे जा रहा है तो एफपी ऊपर लगाया. इस केस में नीचे जा रहा है तो एफपी किधर लगेगा? सर ऊपर लगेगा. ऊपर लगेगा. वैल्यू कितनी होगी स्यूडो फोर्स की? सर एम ए क्या a1 या a2? A2 a2. और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन, तो ये कितना लिखेंगे? सर A1 माइनस A2. a1 ऊपर जा रहा है, a2 नेगेटिव हो गया ना, नीचे है तो. हाँ, तो ये a1 प्लस a2 हो जाएगा. रिलेटिव एक्सेलरेशन A1 वाला प्लस कंसेप्ट. A2. हाँ, रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाना है. हाँ a1 ऊपर है प्लस हाँ j, a2 नीचे है माइनस j. सो लाइक दिस. तो ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में a1 प्लस a2. It is just like this. Suppose there is a train going in the forward direction and you are in the downward direction. You're moving in the downward direction. तो और तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा. And the train is moving opposite to you, so it appears
much faster than its actual motion. So इसलिए दोनों acceleration add up हो गए. Okay, now write the equation. क्या equation लिखेंगे इस केस में? इक्वेशन सर n न्यूटन माइनस fp स्यूडो फोर्स. न्यूटन नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल फोर्स है. ओह सर सॉरी, ठीक है, नॉर्मल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स माइनस mg. mg. This will be equal to This will be equal to m times a1 plus a2. करेक्ट. इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है कितना है. fp की वैल्यू दैट इज m8. Sir, normal force is equals to m times a1 plus g. a1 प्लस g. तो क्या ये मैच कर रहा है पुराने वाले फॉर्मूले से? बॉडी ऊपर जा रही है तो a1 प्लस जी ही होगा. m into a1 plus g. That is correct. This is correct. ठीक है, तो स्यूडो फोर्स तब लगता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, जब बॉडी एक्सेलरेटेड हो तब. And it will help you solve as many problems जो बाहर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ ट्रक and is accelerating in the forward direction. और I'll not draw the full truck. ट्रक में कंटेनर पीछे लगा हुआ है. कंटेनर में there is a bob which is hanging and the truck is accelerating forward with acceleration a. तो you know कि जब ये आगे जाता है तो the angle which will be made by this string of the bob with the perpendicular, ये पीछे की तरफ जाएगा. Let us say इसका मास m है and you have to find the value of angle theta. तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम से भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी. सो इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, सीधे बाहर खड़े हो जाएंगे. दिस इज इनर्शियल फ्रेम. सो बाहर खड़े हो गए, सिंपली एफपीडी बना रहे हैं. हमारा जो फैला वाला पुराना वाला मेथड था, इससे अगर एफपीडी बना रहे तो टेंशन लगेगा ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग. mg लगेगा नीचे की तरफ. और कोई फोर्स तो है नहीं, दो ही फोर्सेस हैं. एंड ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर से एंगल थीटा हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा और हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है a. सो टेंशन का कंपोनेंट ले लेंगे तो दिस विल बी t sin थीटा एंड दिस विल बी t cos थीटा. वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, सो t cos थीटा इक्वल्स टू mg. हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है तो उसके लिए टेंशन रिस्पॉन्सिबल है. टेंशन राइटवर्ड में लगना है, इसलिए ये बॉब पीछे आ गया. सो t sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. न्यूटन्स लॉ से लिखना चाहे तो t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हियर यहां से आ जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg. एंड यहां से हम tan थीटा निकाल सकते हैं. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. सो tan थीटा इक्वल्स टू a by g. सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a by g. सो ये हमारे पुराने वाले मेथड से हो रहे हैं सॉल्व. बट सी सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज इफ पर्सन, ये पर्सन a था मेथड 1 विद रिस्पेक्ट टू पर्सन a. पर्सन b अगर अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, so he is in non-inertial frame. He is in non-inertial frame and we'll call it method 2.
with respect to person B. So Nirmit, tell me कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम? क्या क्या फोर्सेस दिखाएं इस पे मेथड 2 में? सर टेंशन टेंशन का तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, सेम एंगल थीटा पे। और mg दैट इज करेक्ट। और सूडो फोर्स स्यूडो फोर्स। सो बंदा आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे सर पीछे। या गुड। और कितनी वैल्यू होगी इसकी? m into a m into a। गुड। फिर से सेम काम करेंगे, टेंशन का दो कंपोनेंट ले लेंगे, इट विल बी t sin थीटा और ऊपर आ जाएगा t cos थीटा। इक्वेशन सेम बनेंगे, t sin थीटा इक्वल्स टू fp इक्वल्स टू ma and t cos theta equals to mg. Then tan theta will be a by g. फिर से सेम रिलेशन आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a by g। ठीक है, तो यहाँ पे जो इशू है वो सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना कभी मेथड 2 से बहुत इजी हो जाता है कंपेयर टू मेथड 1। इसमें तो दोनों इक्वली इजी है, बट सी मेथड 2 का पढ़ाने का पर्पस ये है कि कभी कभी सी हियर व्हाट वी आर नॉर्मली डूइंग इज नॉट वैलिड। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा, उसको वैलिड करने के लिए टू यूज दैट मेथड वी हैव डिफाइंड अ स्यूडो फोर्स। अभी सर्कुलर मोशन में आएंगे, so you'll see कि there is a centrifugal force that we have studied in 10th standard. So centrifugal force भी pseudo force। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ उसी पर्सन को दिखता है जो सर्कल के साथ मूव कर रहा हो। बाहर जो पर्सन रहेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता। जो सर्कल के अंदर रहेगा, जो सर्कल के साथ मूव कर रहा होगा, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो अ स्यूडो फोर्स। we'll see that later। इस चैप्टर के बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, then we'll see that। so okay, note this down। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे? okay, after this draw FPD in this case दोनों मेथड से करना है, pseudo force and normal मेथड से भी। so there is a truck, truck is accelerating in the forward direction with 2 meters per second square, and there is a block over here. The tension in the rope is T that you have to find. Mass of the block is 3 kg. You find tension using both the methods. First person is here, he is outside of the truck, and second person is here, he is inside the truck. दोनों मेथड से टेंशन फाइंड आउट करें। Barbie, what will be the value of tension? 6 Newton, that is correct। So एक केस में टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा होगा, so T is equal to ma, and दूसरे केस में जब B ऑब्जर्वर होगा, so of course N और mg तो होगा ही, so N mg। दूसरे केस में pseudo force will be balancing the tension। Pseudo force will be in the backward direction because person is accelerating out in the forward direction। E is equal to Fp, gain is equal to mass into acceleration। दोनों से टेंशन की वैल्यू 6 न्यूटन आएगी। So there is a question which really becomes easier when you solve it using pseudo force, and that is when you keep a सर yeah तो वो सेकंड मेथड में डाउट है tell me। सर इसमें t माइनस एफ इक्वल्स 6 होगा ना? T minus Fp equals to 6 क्यों होगा? सी B के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना,
बी के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक रेस्ट में, ए के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 2. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ. सो ध्यान देना, बी क्या ऑब्जर्व करेगा? बी ऑब्जर्व करेगा कि ब्लॉक रेस्ट. अगर स्यूडो फोर्स नहीं होता देन मैजिक वुड हैव बीन हैपेंड कि ब्लॉक रेस्ट में है बट नेट फोर्स लग रहा है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज का फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे. नेट फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट रेस्ट में. Okay, suppose the next question is like this. So there is a block of mass capital M और उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है जो स्लाइड कर सकता है. There is no friction. Friction अभी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे हम. Small. And a person is applying some force. Person is applying some force. What should be the value of F? Find F. Find F such that mass M does not move with respect to capital M. That is the question. So दोनों मेथड से कर सकते हैं. दोनों मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट इज बाय स्यूडो फोर्स एंड सेकंड इज बाय, फर्स्ट मेथड जो पुराना वाला मेथड है, सेकंड मेथड इज बाय स्यूडो फोर्स. So I will do it by first method. I will do it by second method. Pseudo force वाले से कर लेते हैं. The first method you will be your homework. So see, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं. Of course, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा a. So एक रिलेशन तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. F is equal to m plus m a. ठीक है, दोनों का साथ में फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये लिख सकते हैं. सिर्फ छोटे वाले ब्लॉक का वीडी बनाया और यहाँ पे खड़े होके बना रहे हैं. यहाँ पे खड़े होके बना रहे हैं मींस यू आर आल्सो एक्सेलरेटेड विद ए. तो फोर्सेस लगेंगे mg, नॉर्मल फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन. और स्यूडो फोर्स की वैल्यू पता है हमें, मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन. यहाँ से बैलेंस आउट कर लिया तो एक्सेलरेशन बहुत इजीली आ जाएगा. सो इफ ये एंगल भी गिवन है, सपोज दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा देन वर्टिकल से ये वाला एंगल भी थीटा हो. सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. सो n का कॉम्पोनेंट लेंगे तो इधर आ जाएगा n cos theta and here it will be n sin theta. So दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम बिकॉज इस पर्सन के रेस्पेक्ट में the block is at rest. And cos theta is equal to mg and ma is equal to n sin theta. और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे. Now you have to find the value of acceleration. मुझे नॉर्मल फोर्स एलिमिनेट करना पड़ेगा. So यहाँ से you get the value of normal force as mg by cos theta, and if you put it here, you'll get ma equals to mg by cos theta into sin theta, that is mg tan theta. So acceleration is g tan theta, and you can put it here to find the value of force. Force की value होनी चाहिए m plus m g tan theta. This should be the value of force. ये question you have to try it using the first method. बाहर से बैठ के FBD बनाना. Of course the forces will be different. और फिर solve करना. थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. कितना टाइम इसमें लगा उसका डबल टाइम लगेगा. But you have to figure out कि कैसे solve करें. ठीक है, note this down.
So this test, the DPT will be held on Wednesday, and topic will be this kinematics only. Topic will be kinematics only. Pura motion in 1D and motion in 2D. सर ये components कैसे लेते हैं? फोर्स के कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, मतलब वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर नहीं ये क्वेश्चन में डाउट है. हाँ, कहाँ पे डाउट है? वो एंगल अच्छा, एंगल. एफपीटी में. अच्छा, तो ये एंगल दिया हुआ था, ये एंगल गिवन था, एंगल थीटा. तो फिर मुझे पता है कि एक फोर्स तो सरफेस के नॉर्मल हो गए और एक सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा. यस सर. ठीक, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी पूरा 90 होगा. ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा. हाँ. ओके, उसके बाद ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा. सर बट इसमें सर पता कैसे चलता कि एन का कंपोनेंट लेना कि हाँ, ये तो प्रैक्टिस से आएगा. दिस यू विल गेट बाय प्रैक्टिस. बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. इंक्लाइंड ने तो भी जस्ट स्टार्ट किया. एक हिंट ऐसे पता चलता है कि सी mg और फोर्स के भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम चाहते तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी कंपोनेंट्स ले लेते, बट उस केस में mg का भी कंपोनेंट लेना पड़ता है और स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो 4 फोर्सेस हो जाते हैं बैलेंसिंग द नॉर्मल फोर्स. आंसर वहां से भी आ जाता है, बट इस केस में मुझे सिर्फ एक फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ रहा है, सिर्फ नॉर्मल फोर्स का. But see, different cases you will understand by practice only. Okay, in the next class, be prepared for your DPT, and we'll continue with the same topic. ना pseudo force अब एक normal चीज हो जाएगी जो हम use करेंगे. जिन भी क्वेश्चन से pseudo force से क्वेश्चन easy हो रहा होगा, I'll be telling you. And अगले क्लास में हम friction start करेंगे, and pulleys, multiple pulleys अगर लगी हो तो उसमें कैसे solve करते हैं वो भी solve करेंगे. So if you have any doubts, you can ask now. Otherwise, that's it for today's class. और Wednesday तक सबको अर्जुन का और कुशागर का बचा हुआ है, that you have to submit your homeworks. ठीक है, that would be all for today. Any questions? कहीं से भी you can ask. If there are no questions, you can leave the class. सर एक क्वेश्चन में डाउट है. हाँ, tell me. व्हाट्सएप पे भेजूं? Yeah, okay. Send me on WhatsApp. So the question is this: sum of two forces P and Q is R such that mod of R equals to mod of P. ठीक है? The angle theta such that the resultant of 2P and Q will make. Okay. Mod of R is equal to mod of P. And P plus Q equals to R. Angle theta in degrees such that the resultant of 2P and Q, so angle between
2p vector plus q and q vector. This you have to write. And write it in like this: mod of r equals to mod of p. So अगर यहाँ पे mod लगाते हैं, so mod of p plus q equals to mod of r. This will give you mod of a plus b क्या होता है? Under root over a square plus b square plus 2ab cos theta. Let me call it as cos alpha. Alpha is the angle between p and q. And mod of r is r. So p square plus q square equals to r square. And r square and p square are equal. So I can write r square as p square. R square, p square cancel out, goes away. From here I can write cos alpha equals to minus q by 2p. Now angle between 2p and this. So angle between them is theta. So cos theta will be mod of a 2p vector plus q dot q vector divided by mod of 2p plus q into mod of q. A dot b divided by mod of a mod of. So 2 plus this will be 2 p dot q plus q dot q. p और q के बीच का एंगल अल्फा लिया था. And mod of 2p plus q निकालना है. Mod of q तो q ही रहेगा. So mod of 2p plus q, that will be root over 2p square, that 4p square plus q square plus 2pq. Shall I call cos beta? सर 8pq 4pq ना. और सी p और q के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो p और 2p और q के बीच का एंगल भी अल्फा ही रहेगा, राइट. 2p जस्ट ऐसा बढ़ा देंगे, that will become 2p. And q dot q तो q square हो जाएगा सिंपली. p dot q हो जाएगा pq cos alpha. And this thing will be q root over p और q पे कोई रिलेशन है क्या? cos alpha को q by 2p लिख सकते हैं, but alpha is not there. अगर इसमें cos alpha को minus q by 2p लिखते हैं, so this will be 4p square plus q square. cos alpha को minus q by 2p लिख देते हैं, so this will be minus
क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, p कैंसल आउट हो जाएगा, 4/2 so with 2q square plus 4p square minus q square. cos अल्फा को अगेन लिख सकते हैं यहाँ से -q/2p 2pq into -q/2p. ओके, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये तो 0 ही आ रहा है. So 2q cancel, 2p cancel, it will be coming as 0. Cos theta is 0 means theta is 90 degree. ठीक है. Is this clear? यस सर. ठीक. सर फोटो देनी है. सर और एक क्वेश्चन में डाउट है. Yeah, send me. A1 is 3, A2 is 5, A1 plus A2 is also 5. The value of 2A1, 3A2, 3A1, 2A2. All right. So A1, A2 के बीच का एंगल, let us say it is alpha. So mod of A1 plus A2 को लिख सकते हैं 5. Mod of A1, A2 is root over A1 square plus A2 square plus 2A1 cos theta. So 9 plus 25 plus 30 cos alpha. यहाँ से cos alpha आ जाएगा 25 minus 9/30 minus 3/10. cos alpha आ गया, उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है. So this is 2A1 vector plus thrice of A2 vector. तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम नॉर्मल प्रोडक्ट लगा सकते हैं. सो पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 6 times A1 डॉट 8. पहला सेकंड वाले के साथ दैट विल बी 4 times A1 डॉट 8. यहाँ पे A1 डॉट A1 आना चाहिए. 2 3 6 times A1 डॉट A1 minus 4 A1 डॉट A2. सेकेंड केस में प्लस 9 A2 डॉट A1. अच्छा, A2 डॉट A1 is equal to A1 dot A2 because dot product is commutative. And last one is minus 6 A2 square. Yeah, minus A2 dot A2. ठीक है. So A1 dot A1 is A into cos 0. So A1 square हो जाएगा 9. So 6 into 9. This is 9 minus 4, 5 A1 dot A2. A1 dot A2 will be A1 into A2 into cos alpha. And 6 times A2 cos 0 because A2 और A2 के बीच का एंगल है 0. So A2 square हो जाएगा 25. This you can calculate to get the answer. 54 plus 25. 45/2. 22.5 minus 25 6 120 150. तो वो -22.5 नो माइनस होगा. yes.
18 3s are 54, 18 4s are 72, 180. D option answered. ठीक है? Yes, sir. Okay, I have to start another class now. और without stresses करेंगे फिर next class. Okay, sir. Okay, thank you.